Good morning, students. Today we will continue the previous topic, that is the separation of the mixture by using the different methods. So the next method that we will discuss is sublimation. The sublimation method, it is used for the separation of mixture of common salt and the ammonium chloride. Okay. Now I hope you all are familiar with this term sublimation. Sublimation, it is the process in which the solids, they are directly converted into the gases, or we can say that gases, they are again directly converted into the solid without passing the liquid state. So here in this method, one component, it should do sublimation and the other component should be non-volatile. Now what is non-volatile? Non-volatile substances are the substances which do not convert into the vapors. जिनके vapors नहीं बनते उनको हम non-volatile substances बोलते हैं. Okay. Now we will discuss the chemicals which undergo the sublimation. They are camphor, okay, जिसको आप कपूर बोलते हो, naphthalene boles, iodine and anthracene. Now if we take the view of the diagram, the setup which undergoes the sublimation, here we take the china dish. In china dish we keep the mixture, okay. Then we cover that mixture with the funnel and that funnel is inverted. After that what happened, we close the stem of the funnel with the cotton plug and then we start heating the mixture. So let's take the view of the experiment. Take the mixture in the clean china dish, cover the china dish with an inverted funnel, close the stem of funnel with the cotton plug. Now what happened, as we start heating this mixture, we observe that the white fumes, the dense white fumes, they are formed and they settle on the sides of the funnel, okay. Then what happened, after some time, when all the fumes, they get settled on the sides of the funnel, these vapors, they are of ammonium chloride, okay. So the part that remain in the china dish, it is the NaCl. So NaCl, it get left in the china dish. So by this method we can also separate the mixtures like camphor and sand, iodine and sand also. Now let's move to the another kind of method, that is the separation of colors component of ink, and the method is chromatography, okay. So this chromatography, it is named as chromatography because the chromo word is related with the color. So as in by this method we are separating the components of the color, different color dyes. So this method is named as the chromatography. So by this method generally we separate the color mixtures, but we can also separate the colorless components also, okay. So the most important part of this chromatography is the principle that is followed in the chromatography. Now if we take the different substances, we all can say that different substances, they may dissolve in the same solvent. हम एक solvent में बहुत तरह के substances को dissolve कर सकते हैं, ओके. बट अगर हम उनकी solubility power देखें तो सभी की solubility part different है. कोई जल्दी solubilize हो जाएगा, कोई देर में solubilize होगा, okay. So the substances which is more soluble in the solvent dissolves and moves relatively faster along with the solvent. अब वो substances जो easily solubilize हो जाएंगे और जो ज़्यादा soluble होंगे solvent में, वो solvent के साथ दूर तक carry on होंगे, okay. As a result, it gets separated from the other substances in the mixture. So if we have to explain the principle in very precise manner, okay, अगर आपके पास एक नंबर में principle आ जाता है तो आप कैसे explain करोगे? The different solubilities of component in the same solvent is the principle of chromatography, okay. So different solubilities of components, मैंने अभी भी बताया, अगर हम different substances को same solvent में dissolve कर रहे हैं तो क्या होगा, सभी की solubility पार अलग अलग है,
तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी पार्ट्स हैं वो अलग होंगी सेम सॉल्वेंट में. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लैक इंक. We will perform the chromatography to separate the components of black ink. So for this we have to take a strip of the chromatographic paper. That chromatographic paper, it is the special kind of the filter paper. Okay. Now we have to take the strip of that chromatographic paper, a rectangular strip. Then by using the pencil from the lower end we measure 3 centimeter length. Okay, हमने 3 centimeter length लेकर एक इस तरह से लाइन लगा देनी है. मैंने आपको डायग्राम में भी शो कराया हुआ है एंड आपकी बुक में भी डायग्राम्स हैं. Now what you have to do, you have to put a drop of water soluble black ink. आपने जो वो black ink लेनी है वो इस लाइन के सेंटर पे एक ड्रॉप लगा देनी है. ओके, बाय यूजिंग दी कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली सी ट्यूब होती है, बहुत बारीक ट्यूब होती है. उसके थ्रू आपने उसके ऊपर एक स्पॉट लगा देना है ब्लैक इंक का एंड उसको थोड़ी देर के लिए आपने ड्राई करने देना है. उसके बाद आपने उस फिल्टर पेपर की, उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर की स्ट्रिप को एक गैस जार में लगा देना है एंड दैट गैस जार इट कंटेन्स दी वाटर. वाटर विल बिहेव लाइक दी सॉल्वेंट जिसके अंदर वो इंक के कंपोनेंट्स डिसॉल्व करेंगे. ओके, नाउ द इंक ड्रॉप, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इंक ड्रॉप है इट शुड बी अबव द वाटर लेवल. वो वाटर लेवल से ऊपर होनी चाहिए इंक ड्रॉप, वाटर लेवल के अंदर डिप नहीं होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन, द कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इट विल राइज फास्टर. ओके, जो इंक का कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो राइज करेगा यानी सबसे ऊपर चला जाएगा. मैंने यहाँ पर 3 डॉट्स लगाई हैं. तो ब्लैक इंक में अगर 3 डाइज हैं तो जो सबसे ऊपर डाई है इसका मतलब वो ज़्यादा सॉल्युबलाइज हुई है, मीडियम वाली उससे कम सॉल्युबलाइज हुई है वाटर के अंदर, और सबसे नीचे वाली मतलब सबसे कम सॉल्युबलाइज हुई है वाटर में. Okay, now what is the application of chromatography? Again the important question comes from this part. Now this chromatography, it is able to separate the pigments from the natural colors. जैसे कि आपने लीफ के जो कलर्स हैं वो देखने हैं, क्लोरोफिल के कलर्स हैं वो देखने हैं. Okay, then separation of the colored dyes you can do by this method. Separation of the drugs from the blood. Blood में से जो drugs की separation है, यहाँ पर colorless components आ जाएंगे. Okay. Now separation of amino acids by the hydrolysis of proteins. ओके, अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं जिनसे कि प्रोटीन बनता है. तो प्रोटीन जब टूटता है अमाइनो एसिड्स में तो अमाइनो एसिड्स को हम सेपरेट भी किसकी हेल्प से कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर काइंड ऑफ मेथड दैट इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 miscible liquids. Now we should know that what is the meaning of the miscible liquids. हमने, अगर आपको याद है, पहले एक सेपरेशन मेथड पढ़ा था जिसमें हमने 2 इमिसिबल लिक्विड्स लिए थे जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते.